Very good afternoon, Namaskar or Jai Hind. Today's video will be very much interesting. The secession movement. That means in last video, in Assam Accord video, what we have seen and how new states were created and separated from Assam. So two states we are going to discuss here. It's Nagaland and Mizoram. So let us understand first what was the problem of Mizoram when it was separated, when it was created, what was the movement, who led the movement, everything, and very much important for class 12 examination. And then it's also required for all sorts of competitive examination if political science is the part of it, and as well as the history also you can include it. So let us start the video. First of all, let us understand the word Mizo means. Mizoram, we have to understand the word Mi means people in Mizo language, and Zo means belonging to the people of Mizo or Lusai Hills. So we can see that Mizoram means, and Ram means land. Ram means land. So Mizoram is the land of the hill people. In very simple, we can say land of the hill people. But that's the information about the word from where it's originated. It's like their own language. From there it's originated. Now let us understand from where the state was separated. When state originated, हम समझते हैं ये मिजोरम issue था क्या? Since 1947, when the India became independent. So what happened? Mizoram was given an autonomous district under Assam. But because some of the issues like rose later on, for which Mizoram got separated. एक तो था लास्ट वीडियो में हमने देखा तो एक लैंग्वेज इंपोजिशन था. एसामिस लैंग्वेज इंपोजिशन के कारण जो ट्राइबल्स ऑर्गेनाइजेशन है इन लोगों ने अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश की, एंड दैट्स व्हाई दे वर सक्सेसफुल. मेघालय अलग हो गया, अरुणाचल प्रदेश अलग हो गया, मिजोरम अलग हो गया. आप लैंग्वेज को जब प्रेशर करने की कोशिश करोगे इसी प्रकार का मूवमेंट आगे दिखा जाएगा, जिसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. सो व्हाट हैपेंड लाइक पीसफुली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली इफ यू गो एंड implement something, that could have been something much better. When you force someone, तो obviously everyone tries to retaliate. So let us understand, we are not here to discuss what is right and what is wrong. We are only here to discuss the information that we have in the book, information we have in the internet, we have in all the sources and the research papers, so that we can also further we can appear in examination. That's it. We are not here. Everyone has their own definition and own thinking and way process of explaining something. So it's not that it depends upon everyone's thought. So we are not defining anyone's or guiding anyone's thought. We are just here to complete our examination syllabus. That's it. First of all, Mizoram was declared an autonomous district of Assam since the time of independence. But the problem started, when the people of Mizoram had to face the famine of 1959. And another problem was there, the local people of Mizoram, what they said, like some leaders were there, what they said, like, though Mizoram was not the part of the British India, so Mizoram was not in the part of the freedom struggle of the movement of India, then why किस लिए हम इस देश का पार्ट बने? तो कुछ लीडर्स ऐसे थे जो मिजोरम को सेपरेट कंट्री मांग रहे, अलग मांग रहे थे. दे वर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, अपना मांग रहे, क्योंकि जो 19 इंडिपेंडेंस एक्ट पे जो बना था, जिसके लिए हैदराबाद इशू हुआ, कश्मीर इशू हुआ, तो इसके हिसाब से मिजोरम ने बोला कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया. मिजोरम ने नहीं बोला, मिजोरम के कुछ उस समय के लीडर्स ने यह कहा था कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के हम लोग पार्ट नहीं थे, तो हम उस ब्रिटिश के मूवमेंट में भी नहीं थे, तो वाई शुड वी ये कुछ लीडर्स ने कहा था अपना पॉलिटिकल गेन के लिए. उसके साथ साथ सम पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड टू गेट द ऑटोनॉमी और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट अंडर असम. और 1959 पे क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि हम लोग देखभाल करेंगे, एवरीथिंग लाइक दैट. और 1959 पे क्या हो गया, एक बहुत बड़ा फैमिन आ गया, जिसको हम लोग सूखा, महामारी, बीमारी, खाना नहीं है. तो ये इसमें बहुत सारे लोगों के जान गए, बहुत सारे लोगों के. तो जिसके कारण मिजो पीपल वेर नॉट सेटिस्फाइड. दे बिकेम वेरी मच एंग्री विद द गवर्नमेंट, द वे दे डील्ड विद दिस सिचुएशन. तो इस प्रॉब्लम को पीपल डिड नॉट लाइक, बिकॉज फैमिन को वो अच्छे से अरेंज नहीं कर पाए, जिसके कारण दे स्टार्टेड द मूवमेंट, द मास मूवमेंट, द पीपल स्ट्रगल उन्होंने शुरू किया. पीपल मास मूवमेंट स्टार्ट करके सभी लोगों ने मिलकर वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है MNF, यानी मिजो नेशनल फ्रंट, अंडर द लीडरशिप ऑफ लालडेंगा. ये नाम बहुत जरूरी है. यही है बाद में जो मिजोरम का पहला चीफ मिनिस्टर बना जब मिजोरम वॉज कंप्लीटली डिक्लेयर्ड एज द स्टेट. सो मिजोरम का प्रॉब्लम क्या है, पहले वो इंडिपेंडेंस के बाद वो बोला ऑटोनोमस स्टेट, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. बाद में एक लैंग्वेज इशू था, उसके बाद वहां के लोगों का प्रॉब्लम क्या हुआ,
जब फैमिन के समय असम गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिजोरम का ख्याल नहीं रखा, उनका कहना था, और उनका ये भी कहना था कि मिजोरम ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था, ब्रिटिश ने यहाँ पर ऑक्युपाई नहीं किया था, तो क्यों हम इंडिया का पार्ट बने आफ्टर इंडिपेंडेंस, वी कैन ऑल्सो बिकम एन इंडिपेंडेंट। बट ये सिर्फ मिजोरम का स्टेटमेंट नहीं था, मिजोरम के कुछ लीडर्स का स्टेटमेंट था उस समय में। नाउ मिजो नेशनल फ्रंट आ गया। इन लोगों ने क्या किया, पहले डिमांड करना शुरू किया फॉर द दिस वन पीसफुल सेपरेशन। बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने आर्म स्ट्रगल शुरू कर दी 1969। 2 डेकेड तक ये चलता रहा, 2 decades, 20 years they continued their struggle। तो क्या हुआ, 1966 में ये इन्होंने आर्म स्ट्रगल शुरू कर दिया, 2 डेकेड तक चला। बाद में 1986 में 66, 76, 86, कैन यू इमेजिन, पूरा 20 साल बाद 1986 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो एकॉर्ड साइन हुआ, दैट इज कॉल्ड मिजोरम एकॉर्ड, साइन बिटवीन राजीव गांधी एंड मिजोरम लीडर, दैट इज MNF लीडर, मिजो नेशनल फ्रंट लीडर लालडेंगा। और यहां होने के बाद एक डेमोक्रेटिकली उनका इलेक्शन होने के बाद ही बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। नाउ मिजोरम को ऑफिशियली इन्होंने स्टेटहुड तो मिल लिया, क्योंकि उनको एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जो एकॉर्ड साइन किया था राजीव गांधी और लालडेंगा के बीच में। राजीव गांधी द न्यूली मेड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बाय द टाइम आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। सो ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया ऑन 20th February, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 20th February 1987 मिजोरम वाज डिक्लेयर्ड एज a state of India under the Union of India. So, and Laldenga became the first chief minister of the state, and soon after that, we can still now witness now Mizoram is one of the most peaceful, states of Northeast as well as in India. Education बहुत ज़्यादा, literacy बहुत अच्छा है उन लोगों का, first second केरला के साथ चलता रहता है इनका competition. So literacy is also good. You can also, like many YouTube and Facebook videos, we have seen that traffic so beautifully controlled in even the pandemic situation. They also controlled it very well. Their production is very good. So we can sum up that after that statehood they got, after Laldenga became the prime minister, chief minister of the state, so they became very much like the move peacefully they moved on. So ups and downs, problems हर किसी राज्य में आता है, तो इसमें भी कोई ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा, but peacefully we can say overall हम देख सकते हैं मिजोरम अच्छा grow कर रहा है, now one of the very successful states of Northeast. Now the next one we see that it's Nagaland. Nagaland means the land of Nagas. So this state, since independence, they also started the the issue started. Many negotiation had been held. बहुत सारे negotiation सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हुआ, लेकिन वहाँ के जो रेबल्स हैं वो लोग इस नेगोशिएशन को मान ही नहीं रहे थे। तो ये नागालैंड इशू बहुत लंबा चलता रहा था, इंडिपेंडेंस से लेकर बहुत दिन तक चलता रहा। प्रेजेंटली अभी देखा जा सकता है कि थोड़ा बहुत सेटलमेंट हुआ है, लाइक यू कैन सी ए वेरी पॉपुलर नागा बीजेपी लीडर, ही इज़ वेरी मच पॉपुलर, दिस वन, हिज वीडियोस आर वेरी वायरल ऑन द सोशल मीडिया, यू कैन सी दैट। सो आजकल थोड़ा सा लाइक सभी एवरीवन in the state or everyone in the country, everyone in the world, someday or somewhere somehow has to move towards the peace, the path of peace. Peaceful और constitutional way से आगे बढ़ेंगे तो शायद हर कोई जगह पर हम लोग देख सकते हैं। स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ साउथ इंडियंस, जहाँ पे जो द्राविड़ा मुनात्रा कजगम, इन लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन, उनका डिमांड्स इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल वे किया, लेकिन इंसर्जेंसी इशू को उन लोगों ने रेज नहीं किया, और जिसके कारण वी कैन सी द डिमांड्स बहुत ज़्यादा फुलफिल भी होता है। अभी हम आगे देखते हैं, लाइक इनका मिजोरम नागालैंड वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्टेट्स, फर्स्ट इंडियन प्रोविंस जिसने इंसर्जेंसी का रास्ता पकड़ा, आर्म्ड रेबेलियन का रास्ता पकड़ा फर्स्ट, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद एक 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 करके शुरू हुआ। इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ पहला, so demand. So we will see that as per book we will go. We are not here to judge or justify anyone is wrong or right. We are here to complete our syllabus. So let us understand the Nagaland issue. Nagaland issue का Nagaland movement for independence ये चलाते रहे, उनके लीडर थे अंगामी जापू पिजो, ये नाम जरूरी है, who was the creator of a pioneer of Nagaland movement for independence. They wanted to get separated from Indian Union. So ये है अंगामी जापू Piso, he was the leader. So, beg your pardon if I mispronounce the name, because these are the names of the Naga people, so probably we may not know the real pronunciation. So, he was the president of Naga National Council. Naga National Council, the local people of Naga people of Nagaland, they were not satisfied with the negotiation held with the government of India.
भारत सरकार के द्वारा जो जो नेगोशिएशन किए गए थे, जो भी बातचीत की गई थी, जो एग्रीमेंट किया गया था, उस एग्रीमेंट के साथ ये लोग नाखुश थे, दे वर नॉट हैप्पी। दैट्स व्हाई जो रेबल्स बने, ये आंदोलनकारी, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नागा नेशनल काउंसिल। बाद में हम उसको आगे देखते हैं कैसे चेंज हुआ। अंडर हिम a section of people that declared independence. Nagaland, they themselves declared independence in 1951. They declared themselves they are not the part of the country or union of India. So you can see a few years ago, in the last year, even the previous year also, on Facebook, on social media, you can see the videos floating there. There some people are there who are burning the national tricolor of Indian nation. So some issues they were going on. Despite that, we cannot say that they are not the part of the country. They are one of the integral part of our country, and we are proud of it. So let us move on. Say a section of the Naga, they signed agreement with the government of India. As I said, peaceful way, everyone agrees. So there are also people who agreed the peaceful settlement and discussion with the government of India. तो इन लोगों ने peaceful agreement करके नागा लोगों ने साइन कर लिया agreement government of India के साथ. But many of the rebels that did not agree, and they started the violent insurgency, जो इंडिया का स्टेट के हिसाब से पहला स्टेट है जिसने इंसर्जेंसी का रास्ता पकड़ा फॉर द सेपरेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन से, इंडियन गवर्नमेंट से अलग होने का पहला ये, ऐसा नहीं कि दूसरा राज्य में इंसर्जेंसी इशू नहीं हुआ, मतलब स्टेटहुड का अलग सेपरेशन के लिए फर्स्ट स्टेट अगर कोई है इंडिया में जिन्होंने आर्म का रास्ता लेकर सेपरेशन मांगने की कोशिश की, इंडियन यूनियन से अलग होने का। स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। नागालैंड वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया who started the insurgency against the Indian government for the separation for their independence. So that's then from that point of view, I'm not saying from where insurgency originated. Then we come to the the Naga were the first insurgency they have taken. Then this organization, they with the span of time, gradually उन्होंने समय के साथ इसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया। जो रेबल्स है उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NSCN कहते हैं। NSCN ये एक ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां के नागा पीपल का लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने अपने इंडिपेंडेंस यानी सेपरेशन एसोसिएशन मूवमेंट को चलाया फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, फ्रॉम इंडियन यूनियन से अलग होने के लिए। बाद में इनके पीछे कुछ ऐसे मन मुटाव हुआ जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड बन गया। एक NSCN है जो आइजक मुइबा शॉर्ट में हम कहते हैं, जिसको आइजक सूटी एच मुइबा, एंड एक ऑर्गेनाइजेशन फिर बना, वो है खपलांग। यानी NSCN दो है, एक है NSCN आइजक मुइबा और एक NSCN के, NSCN आई और NSCN के। तो आई इज आइजक सूटी एच मुइबा और एक है खपलांग। तो दे वेयर द टू सेपरेशन, और ये स्प्लिट होकर दो ऑर्गेनाइजेशन बने। मे बी एक का प्रिंसिपल्स और नीति शायद उनको पसंद नहीं आया, मे बी एक गवर्नमेंट के साथ या वो पीसफुल एग्रीमेंट में जाना चाहते हैं, और एक में भी नहीं चाहते। तो दैट्स व्हाट देयर इंटरनल इश्यूज। तो वी आर नॉट हियर टू जज एंड डिस्कस व्हाट हैपेंड विद देयर फिलोसफी एंड प्रिंसिपल्स। दैट्स इट अबाउट द नागालैंड इशू। दे स्टार्टेड इंडिपेंडेंस, दे डिक्लेयर्ड। ये डेट इंपॉर्टेंट है, अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया 1951 में, दैट्स इंपॉर्टेंट। उनका लीडर का नाम क्या, अंगामी जापू पिजो, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नागा नेशनल काउंसिल। बाद में जो रेबल्स ने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए वो हो गया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो बाद में स्प्लिट होकर एक आइजक मुइबा और एक खपलांग बना। सो दैट्स इट। एंड उनका लाइक their movement went on for long years. They started like insurgency issues went on in Nagaland, as everyone we have seen. But now we can see recently Along ji, yes, one of the very prominent leaders of the BJP from Nagaland, Mr. Along, is very much popular nowadays. You can see his videos and the way he speaks in Hindi, that was so fascinating. So like normally the North Indian people and the mainstream nation, parts of the nation, what they think that we the Northeastern people, we cannot speak Hindi, we cannot adapt the culture of the other. But it's wrong. We do understand, we do speak, हम बात करते हैं, हम उनकी भाषा सबको समझते हैं. Like हमारा प्लस पॉइंट ये है कि being in the part of the northeastern state, which is very much a remote area, which is connected with the mainstream, with a small narrow chicken snack, surrounded by the foreign countries from all the sides. Despite that, we know the history of our land, history of the mainland and the whole world as well.
but very shameful when you go to the northern part of the country. They don't even understand Assam is the part of country, and they don't even know that Mizoram and Nagaland is the part of the country. So that's shame for them, those who don't understand. And even I was asked somewhere by, when they asked me from where, I said from Assam. They asked me about what was the amount I paid for the visa. So that's like not disgusting. Like, I did not feel humiliated, rather I felt that how poor the guy was. He didn't even know about the Indian map, Indian geography, Indian history. What a shame. Even the shame of the institution who taught him, the shame the person who taught him, and the same shame for those entire state who even walking in such a prestigious place, they're asking and talking such rubbish things. So we being the part of the northeastern area where transportation is a big issue, the stepmother attitude of the national central government, that was another issue. We are surrounded by the hills and massive hills, and everywhere insurgency issue we have, developmental issue we have many other problems. Despite that, our knowledge and our education is much better than most of the for example, Mizoram. See the literacy rate of Mizoram and other northern states. Look at the Bihar. So that's like, we are not here to judge other, but like simply, it's not about any particular place or district is bad. Very simple. We have to understand that we all are the part of the union of nation. We hum sab Bharat ke part hai. So we must understand that we are the union of nation. That's our only way to we can fearfully, oh sorry, freely, without fear, freely we can say that there is a unity in the midst of diversity, and we are proud of it.